in his thoughts. نعوذ ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. High Commissioner of Pakistan to Sri Lanka, His Excellency Major General Fahimul Aziz Sir, Deputy High Commissioner Wajid Hassan Sir, diplomats, guests, ladies and gentlemen. Today I thought to give a different concept or explanation regarding this conflict. We have been witnessing this for the past more than 7 decades, nearly 8 decades. Since 1947, when partition occurred, when partition was created to destabilize the Asian region. In the name of religion, in the name of caste, in the name of humanity. Now, the confusion comes. Why in the name of humanity the dispute was created? That's the easiest thing to do. Patta dal do, it will be created. Why I say this? Since 1947, India and Pakistan have waged 3 wars, 3 major wars. And the reason, Kashmir. Apart from the 71. The people of Kashmir had the choice either to join India, either to join Pakistan, or go for a referendum and stay independent. I had the privilege of visiting both sides of Kashmir, and when I went in 2018 to the Indian side of Kashmir with a parliamentarian who was in the opposition, we had a privilege of going deep inside and meeting at that time chief ministers of Kashmir, and I would name Mr. Farooq Abdullah's residence. We were host for a dinner. We had a long discussion. So I had the privilege of seeing that side of, hearing that side of story. And in 2020, I went for a program which was as a government guest of Pakistan, and I had the privilege of seeing with my own eyes the prosperity, the farsightedness, fearlessness, and the courage of development and to form their own independent Azad Jammu and Kashmir, that side of Pakistan. Indian side of Kashmir, when I went, I saw fear of voicing their own concerns and the future of their children. In 2019, the special status which was given to the state of Jammu and Kashmir was abrogated. And of course we know, in August, 5th August, what happened? Article 370, Article 35A, what not? Those are on the paper. But the killings, abductions, gang rapes, molestations, stone, and arrest, illegal detentions, and firing of rubber bullets when you get blind. सबसे बड़ी नेमत होती है नजर अल्लाह की, तो ऐसे तो सभी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, बट नजर का जो रहमत है उसका कोई मोल ही नहीं. How many people have been widowed? How many women have been widowed? How many families have been displaced? But the problem I see is present day Kashmir is exactly the opposite side of coin of Palestine. Why I join these things? We as Sri Lankans know each and every casualty of Palestinians, but we as Sri Lankans are zero knowledge. We have zero knowledge about Kashmir, although we are just few thousand kilometers away. Sri Lankan Muslims should be
more aware, and they have to create their own awareness about the issue of Kashmir. Today it's Kashmir, tomorrow it may be Sri Lanka. We are never let live in peace by certain international powers or elements. People know you cannot oppress, you cannot, I would put it this way, are the rights of people of the Kashmir being oppressed democratically under the guise of democracy? This is the best way I can give the message across. Being the world's largest democracy, what the democracy and the rights of Kashmir have been given. This is not a small thing. It is like the wound of a beggar. Some people don't want it. Today I was going through a news which said an ex-Indian soldier was killed and two of his family members were hurt below the knees or fired upon, and 500 people were arrested. I had the shock of the day. For a death, one death of an Indian soldier, former retired soldier, you arrest 500 people. Where is the logic? Where is the justice? Where is the so-called democracy and right to freedom? कैसे? जान एक गई और आप 500 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो. उसमें कोई होगा काम पे जाने वाला, कोई होगा अपने किसी घर की जरूरत पे जाने वाला, किसी को भी लेके आप अंदर कर देते हो. And the statement said this has brought control over the situation. 1947, when my grandparents came from the princely state of Junagadh. At that time, no India was created. Yes, in 1947, only India was created. Before that, it was a combination, rightly said by Suryaman, that it was a union of princely states, 565 unions, if I am not mistaken. And 1947, India was created. The Nawab of Junagadh wanted to join the independent country, independent state of Pakistan. And he went for negotiations and Indian army came then, occupied Kerala. That's all. And same state was with Nizam of Hyderabad. Correct me if I'm wrong. We have to see the reason. Only one reason I see. ईमान की ताकत, कलीमा. हम मुसलमान हैं, इसके लिए आज हमको ये तकलीफ है. This has been happening since the time of Mongols, since the time of Byzantine Empire, and this continues in different phases. This is what we have to see. This is what we have to say. Kashmir is creating instability in the whole region of South Asia. Kashmir is a very important thing. When you want to keep an army of nearly 1 million people for about 8.5 million civilians of that state, of so-called your own country which you have occupied, the rights have not been given. Kaise? How? And why? Who is responsible for this? We have seen many governments get toppled because of the Kashmir issue. And what we see is an endless series of killings, abductions, and political instability. I always say, I still feel being chased out of the princely state of Junagadh by a certain community. I don't want to name the community. In 1947 Gujarat riots, if you remember, Gujarat riots not of 2000s, Gujarat riots of not of other Indian Babri Masjid riots of 1996, created
Why? Tomorrow somebody can come in those generation houses are there, but occupied. It's okay. That's totally okay. छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया हमने, लेकिन हमको भगाया गया. I still have that wound, although I was born in 1972. I'm talking about 1947. The stories. My great grandmother has lost an arm by carrying my father in her own, and my father was only 1 year old. He was born in the state of Junagadh. So this is something we have to see. अगर वो जख्म अभी भी मुझ में ताजा है, तो जिनके तो लोग शहीद हो गए, जिनके लोग मर रहे, जिनके लोग रोज जख्मी हो रहे, जिनके रोजगार बंद हो रहे, उनके क्या हालात हैं? I forgive, but I will not forget. आप माफ कर सकते हो, लेकिन कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें आगे जाके और कितने साल, अभी 22 साल के बाद तो 100 साल हो जाएंगे कश्मीर इश्यू को, तब हम ये खत्म करेंगे. कब? कितने जनरेशंस चले गए बस ये सपनों में कि कश्मीर आजाद होगा. लोग कब्रों पे सो रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन. क्यों? कितने जवान शहीद हुए कश्मीर के लिए पाकिस्तान की तरफ से, और जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. मैं हमेशा कह रहा हूं, ये मत सोचना कि आप कितने लोगों को अच्छे लगते हो, कोई जरूरी नहीं. आप अपने घर वालों को, चाहने वालों को अच्छे लोगों को बस काफी है. आप ये सोचो कि आप कितने लोगों को सच्चे लगते हो, और आपकी सच्चाई ही आपके जज्बात और आपकी हक की लड़ाई के लिए, ये आपकी जो सच्चाई है वही काम आएगी. मैं ज्यादा तकरीर लंबी नहीं करूंगा. अलमाजीदा एक मुख्तसर सी बात कर दूं मैं. श्रीलंका में हम लोगों ने देखी है ये चीजें. For 30 years we have seen a civil war in Sri Lanka. We know the pain. At that time I was schooling, but we were afraid to get into a public bus कि कब कोई ब्लास्ट हो जाए, कब कोई ऐसा हादसा हो जाए. हमारी नजरों के सामने कुछ छोटे छोटे हादसे हुए हैं जिससे अभी भी हमको तकलीफ हो रही. मैं किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हक की बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं. और सार्क रीजन ये जो है, ये आसियान से भी स्ट्रांग हो सकता है. आपको लगेगा कि ये सुबह सुबह मजाक कर रहा है. नहीं जी, जितने रिसोर्सेस हमारे पास हैं उससे आसियान से भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं कुछ सालों में, लेकिन वो करने जगह नहीं देंगे. कश्मीर को ऐसे करेंगे कि ये सबसे आसान तरीका है. श्रीलंका में जब कोई हादसा होता तो तमिलनाडु में रोज पेपरों में आता था, न्यूज़पेपरों में, कि श्रीलंकन तमिल्स को बहुत तकलीफ होती है, ये है वो है, सब आता. फलस्तीन में हो रहा है हमको मालूम है, एक टाइम में बोस्निया में होता था हमको सब मालूम था, सीरिया में जो हो रहा है हमको मालूम है, यमन में जो हो रहा है हमको मालूम है. लेकिन कश्मीर हमारा पड़ोसी मुल्क, बस थोड़े ही किलोमीटर, कश्मीर तो बिल्कुल पास में है श्रीलंका के, हमको कुछ नहीं मालूम. इसकी जिम्मेदारी श्रीलंका के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी लेने चाहिए, क्योंकि एक ही आप अपने इलेक्शंस में बात कर रहे हो कि मुसलमान, आप अपने इलेक्शन के बात कर रहे हो कि हक, आप अपने इलेक्शंस में बात कर रहे हो कोएग्जिस्टेंस, बट जब बात कश्मीर की आती है आप किससे डरते हो? क्यों डरते हो? क्या मजबूरी है? बिक गए हो, आप अपने जज्बात को गिरवी रख चुके हो. जब भी आता हूं कहना कुछ चाहता हूं, लेकिन अल्लाह ताला दिमाग में कुछ और चीजें डाल देता है. जब साउथ सुडान क्रिएट हो सकता है कुछ ही महीनों में, ईस्ट तिमोर क्रिएट हो सकता है कुछ ही हफ्तों में, जिम्बाब्वे क्रिएट हो सकता है जो फॉर्मर रोडेशिया कुछ ही समय में. 77 साल हो गए, कश्मीर का हल अब तक नहीं आ रहा. अब
तक नहीं आता। अब नहीं तो कब। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, अब नहीं तो कब। शायद कश्मीर आजाद हो, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन तब तक मुझे छोड़ेंगे कि मैं रहूंगा, अल्लाह आलम। हर मुसलमान सुबह उठता है शहादत का जज्बा लेके, दूसरों का मालूम नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुसलमान का अल्टीमेट गोल शहादत होती है। मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा लोगों को, बस हमारी ईमान भाईचारे में है। भले वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, अमन सुकून से रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं लेकिन डर से रह रहे हैं। क्यों? कि आज हमारी मस्जिद के पास आके बोलेंगे कि इधर पहले मंदिर था। क्या सबूत है आपके पास? आप कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, अखंडता की बात कर रहे हो, लेकिन आप में अखंडता की जो बुनियाद है वो तो नहीं रखते। मुझे यही कहना था कि अगर पाकिस्तान ना होता तो कश्मीर नहीं बचता। ये चीज पाकिस्तान के लिए, सरकार के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, we are really grateful to the people of Pakistan, the government of Pakistan, and to the High Commission of Colombo, Sri Lanka, High Commissioner Sir, Major General retired Paimolaji Sir, Deputy High Commissioner Majid Ali Sir, and Sulaiman. And I'm really grateful to the staff of the High Commission for inviting and giving me this opportunity to share my thoughts for the people of Kashmir. Inshallah, अगली मुलाकात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।